Let's begin on to learning about cell referencing. You know, this is the beauty of Excel, and this is the most wonderful thing Excel has. You know, if you remember, when we used to be in college and we used to get a problem, we used to get a question which is running into pages, and then we reach on the last page, and sometimes we realize, oh, you know, I forgot कि ये input वाला number 4 नहीं था 10 था. And then if we have to change, do we cut all the numbers, right? But here in Excel we don't have to do that. That is the wonder, you know, because with the help of that only you can make your models fully flexible, fully dynamic, fully universal. Just change the input, and उस input से जो effect आ रहा है, जो hundreds of numbers derive हो रहे हैं, next, ultimate output निकल करके आ रहा है. So just change that input. So what will be the change in output? And you know, that is the rule of financial modeling. That's why we follow color coding so stringently, where we say, you know, let's say the blue color are all the input cells and baki sab output. Black color are all the calculations. So that, you know, blue color is the hard coded data. And agar main blue ko change karungi, if I change blue, that is, you know, I'm changing the input cell. And other than that, baki sare black cells are all automatic. So I'll explain you how. Let's say I say, you know, 4 and I say 5. So 4 and 8. So you will not say, you know, ki 4 plus 8 kitna hota hai. You will not say like that. How will you say? You will say, because this is Excel, right? So we will say 4 plus 8 is equals to 12. Why? Because this is automated, right? How it is automated? Agar ye 8 future mein 98 ho jata hai, to the values of output automatically changes, but this will not change. Why? Because the numbers are manually typed in it, right? इनको चलेगा, ये ऐसे रहेंगे, हम इसका कलर चेंज कर देंगे. So all the red color people or blue color people are blue color cells are hard coded. इनको change करते ही these should be automatic. All the black should be automatic. That's how we follow in financial modeling. So everywhere in Excel also, you know, it is very logical to make your work automatic and not, you know, manual. So my point here is, let's take any example. Let's take, you know, मैंने कुछ chocolates खरीदे. I bought some chocolates. I bought some, let's say I bought some candies, है ना? I bought some kulfi, ice cream, जो भी आप पकड़ लो, ठीक है? तो number of, यहाँ पे I will say number of, and here I will say whatever is the, you know, rate per kulfi, rate per item. So let's say I bought 5, 8, 9. एंड जो आपका पर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, लेट्स से इट इज, यू नो, 500, नहीं 500 का नहीं, लेट्स से 50 रुपए का एक चॉकलेट है, 40 रुपीज का एक कैंडी है, ओके, एंड कुल्फी इज लेट्स से 90. Okay, so how do I do is, I say, you know, I say what's the amount. I'll say amount is, you know, this is equals to this. तो you know, जब you drag this, जब आप इस सेल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करते हो, so what happens is this automatically comes. This also automatically, कुल्फी का भी automatically comes. I hope you're getting my point, है ना? तो automatically comes up when you drag the cell handle, or maybe you can do, आप इसको copy paste भी कर सकते हो. You can do copy and you can paste the remaining cells. Okay, now this thing could have been done with one more function, which is sum product, जिसमें आप बोलते हो इस this array versus this array, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो automatically, you know, if you want the sum total of this, so instead of getting this way, you could have got directly from these numbers. तो sum product तो एक shortcut है, which is okay, but here we were talking about cell referencing. Okay, so cell referencing में होता क्या है, Excel को हमने बोल दिया मेरे left वाला into उसके left वाला, and this is the cell referencing we have given, and these are the amounts we have found out.
Okay. Now this cell referencing is, done in a way, this is very, very formula based. And wherever you do this, कहीं पे भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो. लेट्स से मेरे यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं 9 6, ठीक है, एंड आई हैव जस्ट कॉपीड पेस्टेड हियर. एवरीवेयर दिस स्टोरी विल वर्क. कहीं भी ये चला जाए, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, तो एवरीवेयर दैट स्टोरी वर्क्स, एवरीवेयर इट डज दिस इनटू दिस. मेरे लेफ्ट वाला इनटू उसके लेफ्ट वाला. ऑल राइट, this is full open cell referencing. Now let me ask you a question. This is a problem, and you can see, okay, this is a course fees, and these are the amount received. So these are the amount received. Now can you tell me 50,000 and 10,000? So can you tell me कैसे होना चाहिए ये? Yes, how it should be? How it should be? Yes. So what I will do is I will say 50,000 minus 10,000, तो outstanding है इसका 40,000, right? और जब आप इसके सेल हैंडल को पकड़ के when you are dragging it down, तो आप देखो somewhere it is not working. Why it is not working in some places? If you double click, you will see, देखो ब्लू वाला सेल भी नीचे आ रहा था, ये रेड वाला भी नीचे आ रहा था. तो this red one, see this blue border is blue border, this red is red border. So blue one though I wanted to come down, but this red one I wanted to come down, मेरे left वाला. But ये जो outstanding amount, ये जो main amount है कोर्स का जो फीस है, वो तो 50,000 ही रहेगा ना. उसको अगर आप इधर ड्रैग करते हुए आओगे कहीं पे तो it is a problem. The values are not getting right. Okay, so what I will do is I will say is equals to 50,000 and I will lock 50,000. Now there are different types of locks which we do, full lock, partial lock. So how to do the lock? F4. तो आपका जो keyboard है, this is your keyboard, right? In this keyboard, if you see, there are keys, right? जो ऊपर keys हैं F1, F2, F3, right? उन keys को press करना है. Doesn't means F+1, नहीं. ये 1 2 3 4 कीज हैं, ये 1 2 3 4 के ऊपर कीज है F1, F2, F3, F4, try to see F5, F6, right? I hope you are able to see F1, F2 एकदम टॉप पे कीज है. So they are the keys you're supposed to press. F4 अगर F4 से काम नहीं हो रहा है तो फंक्शन F4. तो नीचे यहाँ पे बॉटम में एक FN करके की होती है, FN. टॉप पे F4 है एंड बॉटम में F4 है, तो फंक्शन F4. FN इज फंक्शन, तो फंक्शन और F4 को साथ में आपको प्रेस करना है. तो इधर F4 विल वर्क और फंक्शन F4 साथ में विल वर्क. एनीथिंग, सी, इट डिपेंड्स अपॉन योर कीबोर्ड, अपॉन योर लैपटॉप. सो फंक्शन F4 और F4 व्हाटएवर माइनस आई विल से जो भी आपका अमाउंट रिसीव्ड है वो, तो मुझे पेंडिंग अमाउंट मिल जाएगा. और जब अब आप इसको ड्रैग करोगे और यू कैन जस्ट डबल क्लिक करा, तो देखो यू कैन सी एवरीवेयर इट हैज राइटली कम अप. 50,000 लॉक हुआ माइनस 9,000. या जहां पे भी आप पकड़ो 50,000 लॉक हुआ माइनस whatever it is 5,500, तो रिमेनिंग इसका फीस है 44,500. तो 50,000 इज लॉक्ड. इट्स नॉट अलाउड टू मूव हियर, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे कहीं नहीं, पूरा ताला लगा दिया हमने उसको. एंड दिस इज हाउ sometimes with the need of the question, with the need of the situation, sometimes we don't want few cells to move, so we just lock them and let the remaining cells move for our calculation, for our easier answers. All right, with this I want to give you one more question, maybe. All right, so let me take this one. Let me take this one. All right, so if you see this,
Yep. Now you know what's the situation here. We are selling certain units, and we have let's say we have 3 malls. We have one mall in Delhi, we have one mall in Mumbai, we have one mall in Bangalore. Okay, and done. So we have 3 malls, and we have sold some kitna units of itna units of pen, itna units of pencils, itna units of chocolates, itna units of jo bhi. Now I want to know, you know, how much is the amount realized? कितना पैसा मिला? Rupees में कितना money I have received? I want to know. So what I'll say is, आप देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. हम बोलेंगे भैया 55,000 का 55,000 पेन्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक पेन कितने में आपको पड़ी. एक पेन पड़ी आपको 11 रुपीज में. फेयर. I'll say enter. Okay, now can I drag it? Is it working? Like, because I want the value for all pen, pencil, chocolate and all the, you know, Delhi, Mumbai, Bangalore जो भी है. देखो ब्लू नीचे आ रहा है and red is also coming down along with it. We don't want the red one to move, right? So what should we do? Should we lock the red one? Wow, here is it is working nicely. Right side जाने में बहुत अच्छे से काम कर रहा है. Very nice. But इधर down आने में problem है, lock करना पड़ेगा, right? तो चलो let's lock the price per unit वाला red cell. Let me lock. ठीक है, and let's check whether it is working properly. Yes, so nice, awesome. You can see it's nicely working, है ना? It's so nicely working. Oh, see, pencils, chocolates में it's not working. वो तो आपने ताला लगा दिया ना रेड वाले को, तो वो तो रेड वाले का ही नंबर लेगा. It's not moving. It's taking रेड वाले का ही नंबर. It's not moving. Yes. So what to do? Yes. So जब आप बच्चे को ताला लगाते हो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है. अगर आपका अपना बंगलो है तो बच्चे को अपने बंगलो में रहने दो. Whatever is the bungalow, right? But अगर बच्चा छोटा है, आपको लगता है he can fall off these stairs, then lock him on the floor. So here, what do you think? On which floor we live? Yes, we live on the 100th floor. Very nice. We live on the 100th floor, and हम बच्चे को 100th floor पे lock करना चाहते हैं. So what do we want basically? We want this red वाला cell to move right. अपने floor पे हम चाहते हैं कि वो घूमे घूमे घूमे, but we don't want this red वाला cell to come down. I hope you're getting my point. Right. So अब क्या किया जाए? अब आप अगर इसको देखोगे, when you stand on that, you know, red वाला cell and function F4 or F4 whatever works for you, आप फिर से प्रेस करो F4. अब देखो क्या हो गया. डॉलर 100 के आगे आ गया, मतलब ताला किसको लग गया? ओनली 100 इज लॉक्ड. अगेन प्रेस F4. नाउ यू सी D के आगे डॉलर लग गया. दैट मीन्स D इज लॉक्ड, राइट? अगेन यू प्रेस पूरा अनलॉक. अगेन यू प्रेस पूरा लॉक्ड, राइट? सो you see, again I'm pressing, again I'm pressing, no lock, full lock, half lock. तो जो पार्शियल लॉक्स होते हैं उसमें एक होता है रो लॉक, एक होता है कॉलम लॉक. नो लॉक, फुल लॉक, पार्शियल लॉक. सी, किसको ताला लगाना है आपको? 100 रो को या डी को? 100 रो को, राइट? बिकॉज 100 रो पे वी वांटेड टू मूव आगे, बट वी डोंट वांटेड टू कम डाउन. डाउन नहीं आना चाहिए ना, डाउन आ रहा था इसके साथ तो प्रॉब्लम था, राइट? वी डोंट वांटेड टू कम फ्रॉम 100 फ्लोर टू 101 फ्लोर. Okay, so once you have done that and see me dragging and see it's so nicely working, it's not coming down, it's not at all coming down, but you see वो आगे चल रहा है पेंसिल्स और चॉकलेट्स के साथ. इट्स यू नो गोइंग राइट, बट इट्स नॉट कमिंग डाउन. सो दिस इज मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, यानी कि जब आपको
जब आपको सिर्फ रो या कॉलम को लॉक करना हो एंड बाकी की चीजें आपको मूव करनी. Okay, so let's see one more example with this. Okay, so I will say, now here you tell me how we will lock. I will say, 1,000 rupees से आप start करोगे अपनी life में, plus with how much you will grow by 8%. Asset A will grow by 8%. Okay, 8% of what? 8% of जो भी last year था, right? 8% of जो भी base year में था. Yes, so that is how we have done, right? But now, as I drag this, it's taking up all the cells. So what do I do? क्या कर रहा है? देखो ये आगे आगे आ रहा है, परसेंटेज भी आगे आगे आ रहा है. So you will say, okay, Rishita, let's lock the percentage. So, let me lock the percentage. So if I am locking the percentage, you see it is working nicely here, very nicely here. But if I have to drag this, then it will, वो 8% lock हो जाएगा. We don't want that 8% to be locked. So what to do, 8% we wanted to come down, down, down. 8% asset B का 5% होना चाहिए, C का 2% होना चाहिए. Down, down, down it should come. But ये अंदर नहीं घुसना चाहिए. 8% should not come right, right, right. Correct? तो ये जो C4 सेल है, इसका लॉक चेंज करेंगे. फुल लॉक, पार्शियल लॉक, C पार्शियल लॉक, नो लॉक, फुल लॉक, पार्शियल लॉक. देखो किसको लॉक करा है? 4th फ्लोर को. क्या आपको उसको 4th फ्लोर पे लॉक करना है? क्या लॉक करना है? नो, यू वांटेड टू कम डाउन डाउन डाउन, राइट? बट यू डोंट वांट टू कम इनसाइड इनसाइड इनसाइड. सी विंग में लॉक करना है. तो एक और F4 दबाया. अब देखो कौन लॉक हो गया? C लॉक हो गया. 4 इज अनलॉक. C इज लॉक. सो इट विल इज लॉक टू द कॉलम C. वो अंदर नहीं आएगा. Awesome. And now, as I drag it to all the years, you can see it's, cleanly working for all the years. 8% for year 1, 5% for year 2, 2% for year 3, and, percentages are also of the base year, and it is very nicely working. Yes, I hope it's very, very clear. And let's take one last example before we close this. रिबन को मैंने बंद कर दिया कंट्रोल F1 से, so that you have more visualization. Now you can see here, this is revenue per student and number of student per batch. Basically मेरा objective क्या है? मेरा objective है that this 20,000 is multiplied with 7. ठीक है, तो इस पूरे को भी हम कर देते हैं कोई let's say same yellow color, right? But when I'm dragging it here, my objective is not कि ये ऐसे अंदर अंदर आए. मेरा objective है हर cell should be like 10 into 30,000, right? जब आप आगे आगे चल रहे हो तो ये this should not be 9 into 20,000. This should be what? This should be this one into this one, right? तो मेरे वाला number of student per batch and left side वाला revenue per batch. So this is something how I wanna take it forward. And obviously we can't write the formula 25-30 times. We are going to write it only once, and then we are going to drag so that we have it all over. Okay, so let's check it. How do we do it? Apply the formula once, this into this. Okay, think about it carefully, very carefully. How do you want it to go? How do I want it to go? Blue वाला cell. Okay, मैं चाहती हूँ कि वो अंदर ना आए. I want it not to come inside, right? देखो अभी इसमें आप देखो ना, अंदर अंदर आ रहा है ये वाला ब्लू वाला, अंदर नहीं आना चाहिए. ये B कॉलम पे रेस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, right? So ब्लू वाला जो है ये, इसको हम B कॉलम
All right, so when it comes to red wala cell, so red wala cell अंदर अंदर नहीं आना चाहिए. That is something my objective. Am I right? अंदर अंदर नहीं आना चाहिए. So what I will do here is I'll say ये ताला बराबर लग गया. अब यहाँ पे आप किसको ताला लगाओगे? $3 को. Am I right? So here you will say, I want it to be logged to floor number 3. I want it to be logged to floor number 3. And as you drag it here, you can check it's nicely done. Every cell is nicely done. This into this. This into this. This into this. All